Very good morning, class 8. So let's begin with our next topic, that is flame. And this is the part 2 of this chapter, combustion and flame. So let's understand the term what is flame. So you must have observed that different materials burn with flames of different colors. A candle burns with a yellow flame and produces smoke, while LPG, that is liquefied petroleum gas, in your kitchen burns with a blue flame, isn't it? So when a fuel is ignited, it catches fire, that you know. The region in which it burns is called a flame. So I hope it is clear to you. The flame is a region where gases burn. एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है जिसमें गैसेस बर्न होते हैं एंड इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल. और ये कब प्रोड्यूस होता है? जब भी आपका फ्यूल जो है वो कंबशन प्रोसेस शो करता है. The color of the flame depends upon the chemical substance that is burning and the gases released during the combustion. So flame color depends on the substance which is burning. Alright. So all combustible substance do not necessarily burn with the flame. कोई भी combustible substance है, जरूरी नहीं है कि वो flame के साथ ही जलेंगे. जैसे अगर हमने बात की केरोसिन की तो वो फ्लेम शो करेगा. अगर मैं चारकोल या फिर कोल की बात करूंगी, इट विल नॉट गोइंग टू शो अ फ्लेम, बट इट इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. So some of them catch fire on being ignited but burn without any flame, and only those substances which vaporize on burning produce a flame. For example, when you light a matchstick, wood gas is produced which burns with a yellow flame, isn't it? So how does the wax of a candle burn then? So when you light a candle with a matchstick, the wax melts due to heat. The vapor of the wax rises up through the wick and burns when mixed with air. So the vapor of the wax burns with a yellow flame and produces a smoke. Charcoal does not vaporize. The same way I have told you, charcoal being a combustible substance, it will going to burn but does not produce a flame. It burns only with a glow and does not produce any flame. Alright. So I hope it is clear to you that flame is a region, एक ऐसा area है जिसमें where gases burn होती है और it is produced during the combustion of fuel. और ये तभी produce होती है जब वहां पे combustion show हो रहा होगा. whenever fuel will going to burn, it will going to show the process of combustion. So here is a flame is a zone of combustion of combustible substance. There is a slide which will going to differentiate between a kerosene wax which is showing a flame and coal and charcoal which is a combustible substance and which do not vaporize during burning and do not produce a flame. So I hope it is clear to you. So structure of a candle flame. This please you go through it. This you can do it at home and you can see it if you want to see all the zones of the candle. Okay. So there are three zones of candle. The outer zone which is a blue zone and non-luminous zone बोलते हैं इसको बेटा, और जहाँ पे complete combustion होता है. I'm going to explain each and every zone, so don't worry. So the second one is the middle zone which is a yellow zone and it is called as a luminous zone where a partial combustion take place. And the third one is the inner zone where the black color it will going to you can see a black soot particles coming out from there and it's a unburned wax vapors are there. So light a candle with a matchstick and study the parts of the flames at home only that you can do it. So let's talk about the non-luminous zone. So the outer zone which is called as the non-luminous zone, this is in this zone, complete combustion of carbon particles present in a wax vapors takes place. Carbon dioxide gas and water vapor are formed during combustion. So since carbon dioxide gas does not impart any light to the flame, the zone is non-luminous. And this is the hottest part of the flame and is accompanied by a very little light and the flame appears to be blue in color. Okay, so the first zone whatever we have talked about is the outer zone which is called as a non-luminous zone. So I hope it is clear to you. The first zone इसमें complete combustion होता है बेटा, ठीक है, and the color of the flame is blue in color and it is the hottest part of the flame. So next second one is the luminous zone and the part of the flame which actually gives light is yellow in color, and in this zone partial or incomplete, please mark this word, partial or incomplete combustion of wax vapors takes place due to limited supply of oxygen. यहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है इनकम्प्लीट होती है जिसकी वजह से कंबर्शन भी कैसा शो करेगा, वो इनकम्प्लीट और पार्शियल. So hence carbon particles
that are not burned are present in the zone and these particle produce smoke और soot particles. फिर soot particles में आपको एग्जांपल बता देती हूँ. जैसे अगर आप कभी पूजा करते टाइम जब धूप अगर आप उसको लिट करते हैं उसके बाद ब्लैक कलर का आपने देखा होगा धूप से निकलता है एंड दैट इज कॉल्ड अ सूट पार्टिकल्स. व्हेन यू गोइंग टू टेक दैट धूप अंडर योर हैंड, अपने पाम के पास लेके जाएंगे, आपके हाथ में ब्लैक ब्लैक सा निशान हो जाएगा, तो वो बेसिकली क्या है, वो सूट पार्टिकल है. और ये रीजन इतना हॉट नहीं होता है. दिस इज नॉट वेरी हॉट जोन एंड दिस जोन इज कॉल्ड अ ल्यूमिनस जोन. So many students usually get confused between these two zones, so please don't get confused. So the outer zone is called as non-luminous zone and the middle zone is called the luminous zone. Now let's talk about the inner zone, जिसको हम dark zone भी कहते हैं. So ये zone lies करता है close to the wick. wick के बिल्कुल नजदीक होता है. In this region, particles of carbon that are not burned are present. So this is the coldest zone in the flame due to the presence of wax vapor. Wax vapor की presence की वजह से ये coldest zone कहा जाता है. And also known as the central zone. So हमने 3 नाम बता दिए मैंने आपको, inner zone, dark zone and central zone. और the zone of no combustion, यहाँ पे कोई combustion takes place नहीं होता है और इस एरिया में does not comes in contact with the oxygen and the wax does not burn. ना ही यहाँ पे wax burn होता है बेटा और ना ही इसमें there is any contact with the oxygen. Alright. That is why it is called as the coldest zone in the flame. So, I hope the parts of the candle flame is clear to you. And let's talk about the calorific value of a fuel, which is very important on the basis of on the point of view of your board exams. So, many substances such as wood, coal, charcoal, petrol, diesel, kerosene, etc. produce heat and light whenever they ignite it, whenever they show the process of combustion, isn't it? And such substances are known as fuels. That I have already cleared you in the part 1 of this video, of this chapter. So a fuel efficiency contains carbon and hydrogen. When burned in sufficient supply of air or oxygen, a large amount of heat is produced due to complete combustion of a fuel. Yes. The efficiency of any fuel is measured in terms of its calorific value. कोई फ्यूल कितना एफिशिएंट है वो हम कैसे पता लगाएंगे बेटा, उसकी कैलोरिफिक वैल्यू से. सो कैलोरिफिक वैल्यू क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल. सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन हियर इज दिस यूनिट इज गिवन एज किलो जूल पर केजी. ठीक है, इट्स यूनिट इज किलो जूल पर केजी और इसको कैलोरिफिक वैल्यू कहा जाता है और हर एक फ्यूल का कैलोरिफिक वैल्यू डिफरेंट होता है, एज यू कैन सी हियर इन द टेबल. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड अवेलेबिलिटी, दिस विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, बट प्लीज गो थ्रू दिस टेबल. एज यू कैन सी हियर, हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू अमंग ऑल द फ्यूल्स. सभी फ्यूल्स में सबसे हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन की. ठीक है, so calorific value, let me explain you again. That is the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel and its unit is measured in kilojoule per kg. So characteristics of a good fuel. एक अच्छा फ्यूल किसको कहा जाता है? जो readily available है, जो easily मिल जाए, is cheap, जो सस्ता है, easy to store and transport, जिसको हम अच्छे से store भी कर सकें और transport एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, moderate, burns at a moderate rate, produces a large amount of heat and does not leave behind any undesirable substances and does not cause the pollution, which is the main thing. Now, if we talk about inflammable substances, which is the next topic after this, that is the substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with the flame are called inflammable substances. ऐसे substances जिनके इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और वो बहुत आसानी से फायर कैच कर लेते हैं. जैसे आप एलपीजी को जलाते ही वो जलना शुरू हो जाए, बिकॉज व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज एलपीजी गैस जो है that is, it has a low ignition temperature. A paper is also having a low ignition temperature. That is why it catches fire easily whenever you're going to apply an external application. फॉर एग्जाम्पल अगर मैच स्टिक से जलाएंगे आप उसको तो वो इजीली फायर कैच कर लेगा. अगर आप वुड के किसी पीस को जलाएंगे तो इट विल गोइंग टू टेक टाइम बिकॉज इट हैज अ हाई इग्निशन टेम्परेचर देन अ पेपर. So for example, here it's petrol, alcohol and LPG, which is inflammable substances, and they catches fire very easily. So how can fire be extinguished? Fire को हम कैसे extinguish कर सकते हैं, कैसे बुझा सकते हैं हम fire को? ठीक है,
सो रिमूविंग द कंबस्टेबल सब्सटेंस, सबसे पहले हमें फ्यूल की अवेलेबिलिटी को कम करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, बुझा सकते हैं. कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देंगे तो फिर क्या होगा, आप इजीली फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. और थर्ड, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. अगर आप इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल का रिड्यूस कर देंगे तब भी हम फायर को इजीली एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. और यही 3 चीजें जरूरी है आग जलने के लिए. कंबशन में हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी है, वी हैव स्टडीड दैट फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन द 3 नेसेसरी conditions that has been applied or been used to show the process of the combustion. All right, so the next thing is method of controlling a fire. अगर आप कहीं आग लग जाती है तो हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं उसको, by using a water. Water is the most common fire extinguisher and can be used only when material like wood, paper, etc. are on fire. Water cannot be used in electrical equipments are on fire because water conducts electricity and can harm those trying to put out the fire, that you have already studied in class 6 में आपने ये चैप्टर में भी पढ़ा है. So I hope इसमें ज्यादा explanation की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. Water cannot be used to put out oil and petrol fires because they float on the water and continue to burn. So इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में और ऐसी जगह वाटर को यूज नहीं कर सकते हैं जहां पे ऑयल और पेट्रोल फायर्स लगी होती हैं, बिकॉज ऑयल लाइटर होता है वाटर से और वो पानी के ऊपर तैरता है, जिसकी वजह से हम वाटर से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. सो बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, so carbon dioxide is the best fire extinguisher to put out the fire caused by the inflammable material like oil and water and electrical equipments. आपने अपने स्कूलों में देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर को, देखा होगा आपने, है ना. सो कार्बन डाइऑक्साइड एक बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए एंड इन्फ्लेमेबल मटेरियल जैसे पेट्रोल और केरोसिन को कंट्रोल कर सकता है. वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एक्सटिंग्विश फायर्स फ्रॉम फायर एक्सटिंग्विशर्स and where carbon dioxide is stored under high pressure में इसको store किया जाता है. Once released from cylinder, it expands in volume and cools down and it cuts off the contact between the burning combustible substance and oxygen supply को भी बंद कर देता है. और plus also brings down the temperature को भी, ignition temperature को भी, fuel के ignition temperature को भी low कर देता है वो. So hence the fire gets extinguished in most cases. It does not harm the electrical equipment and we often see such fire extinguishers in our schools, offices, godowns and hospitals, etc. Sand may also be poured over some burning materials to put off the fire. It cuts off the supply of oxygen to the burning material. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो सिलेंडर्स में स्टोर होता है बेटा, उसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उन केमिकल का नाम यहाँ दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट विच प्रोड्यूस अ कार्बन डाइऑक्साइड नियर द फायर. सो देयर इज अ नाउअडेज इट इज बीन यूज्ड अ फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आल्सो. और इसमें क्या होता है, ये एक मेटेलिक सिलेंडर होता है जिसमें एक नॉब और नोजल लगी होती है ऑन द टॉप, और ये मेटेलिक सिलेंडर इज फिल्ड विद सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, a glass bottle containing aluminum sulfate which is kept inside the metallic cylinder. So when we strike the knob of the extinguisher against a hard surface, फिर क्या होगा, glass bottle breaks and aluminum sulfate comes in contact with the, किसके साथ आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और वो रिएक्ट करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे. और अ सब्सटेंस कॉल्ड सेपोनिन, बेटा ये प्लीज ये नहीं है आजकल. सो दीज आर द सेपोनिन इज एडेड टू द सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टू प्रोड्यूस द foam of carbon dioxide. So the foam of carbon dioxide comes out through the nozzle which is directed towards the fire, और ये fire extinguish हो जाता है safely, used to extinguish the fire caused by the electrical appliances and inflammable substances like petrol and kerosene. So this is how we can control the fire easily. So harmful effects on the environment due to the burning of fuels. Fuels like wood, coal, petroleum release unburned carbon particles which cause respiratory diseases like asthma. So incomplete combustion of fuel release carbon monoxide. Incomplete combustion कौन शो करता है, बेसिकली आपके जब भी कोल बर्न होता है, चारकोल बर्न होते हैं, इनकम्प्लीट combustion शो करते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो कि पॉइजनस गैस है और इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ. So burning of most fuels release carbon dioxide gas which
causes rise in the temperature of the atmosphere, and this is called global warming.